Namaskar. Welcome to Vandana's art classes. We all know that pouring is a beautiful art form. बहुत सुंदर बनती हैं pouring की trays, pouring की paintings और मैं आज बहुत सिंपल तरीका बताने जा रही हूँ क्योंकि pouring liquid बहुत costly है. Pouring liquid is very costly. So what I do, we have these remaining pieces of soap. Every house has these kind of pieces. I just dissolve them in the water. It takes 5 to 10 minutes in dissolving, and then I fill this water in this bottle and keep it. This is old shampoo bottle and keep it ready. And now I'm going to tell you how to use this soap water for pouring art. Instead of pouring liquid, we can use this homemade soap water. So I have dissolved the soap and I'm collecting it in this bottle. For a simple tray, we need roughly half of this bottle. So I dissolve more pieces of soap and fill it till here. And then I'm going to tell you how to use the soap water for pouring art. Let's start pouring with the discarded pieces of soap. So I have dissolved these soap pieces and some of them were very old, hard, so I just crushed them in the mixie and mix with water. And now this liquid is ready to use. I'll do pouring on a tray. So first step is to paint white color or any other base color on the tray. Let's start. This is a wooden tray. We can use any canvas, but when you are using the canvas, make sure you are keeping the plastic or kitchen foil, the transparent foil, so that tray will not stick to it. Better to use a flat brush so that you can do on the edges also. But if you don't have flat brush, no problem. So step 1 is over. I'll keep it here for 5 minutes. Now I have this glass, any glass you can take. And this is the normal soap solution. So we are taking soap solution. Don't make too much, otherwise it is just the wastage. Now I'm going to take only 3-4 colors. We can use any acrylic paint for it. Please don't use watercolor or oil. Use only the acrylic paint. First, I'm going to make the white. So this is acrylic white. Then second, I'm using the teal green. And like resin, there is no hurry in this. So we can do at our pace. Now third is a peacock blue. Mix nicely and leave it for some time so that the bubbles will settle down. Otherwise, we have to use a back end of a brush or a torch. You know, sometimes some people do very interesting thing. They blow in the bubbles and it helps them to make the cells on the surface. I'm going to do very simple thing first step. नॉर्मली मैं टूथपिक लेके ये बड़े वाले बबल्स को उससे खत्म कर देती हूँ. We have to make sure that level of table is smooth. अब इसको मैं थोड़ा सा हिलाऊंगी और अगर अभी भी मुझे लगेगा कि थोड़ा पेंट कम है तो थोड़ा सा और डाल देंगे. थोड़ा सा मैं टिल्ट कर रही हूँ ताकि पेंट सब तरफ फैल जाए.
अब हम इसमें ब्लो करेंगे. I have used this torch with this cylinder to kill the bubbles. फ्रेंड्स, जब हम एक्रेलिक पोरिंग सोप से कर रहे हैं, स्पेशली जब बचे हुए सोप के पीसेस को हम मिक्सी में चला के कम पानी में और कॉन्सेंट्रेट बना के एक्रेलिक पेंट्स उसमें मिला के कर रहे हैं, तो ड्राई होने में कम से कम 4-5 डेज लगेंगे. तो आप डिज़ाइन बना के एक बार पोरिंग करके अपने मटेरियल को ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ उसको कोई हिलाए नहीं, और उससे पहले आप लेवल भी चेक करिएगा कि लेवल से फ्लैट है कि नहीं. हो सके तो फ्लैट टेबल पर ही छोड़ दीजिए, हिलाइए नहीं उसको. तो ये कम से कम 5-6 डेज लगेगा. जब हम पोरिंग मीडियम यूज़ करते हैं तो 36 आवर्स में नॉर्मली सूख जाता है, लेकिन सोप से जब हम करते हैं तो इसमें 4-5 दिन लगेंगे कम से कम, और तभी वो अच्छी तरह सूख पाएगा. और जब ये सूख जाएगा तो इसके ऊपर हमें 4-5 कोट वार्निश के करने पड़ेंगे, या सबसे अच्छा रहता है कि हम एक कोट रेजिन का दे दें, तो उससे वो बिल्कुल ही वाटरप्रूफ हो जाएगा और आगे फिर हम इसको ट्रे को वॉश भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा. सो this is one piece of advice which I think everybody should follow. I hope you like my tutorial. Thank you for liking, subscribing, and sharing the information about my YouTube channel with your family and friends. Dhanyavad. Namaste.